Welcome student. Welcome student. Good morning all of you. Hope you are fine, safe at home. Today's health and physical education class 9. Topic is calculation of BMI and WHR. Calculation of BMI and WHR. BMI means body mass index. BMI means body mass index, and WHR means waist hip ratio. Common topic BMI. Calculation topic is calculation of BMI and WHR. BMI means body mass index. What is body mass index? The body mass index. The body mass index of BMI is a mathematical value that expresses the relationship between body weight and height. Body weight and height. It was invented by the Belgian mathematician, statistician, and sociologist Adolf Quetelet. Who is Adolf Quetelet? Means BMI introduced the Adolf Quetelet. It is very simple method of testing of physical fitness. BMI has a direct relationship with the body fat and is an effective instrument used to calculate the ideal body weight of individual based on his or her height. It helps to know whether a person is underweight, overweight, obese, or has normal weight. In order to calculate BMI, an individual's sex, height, body weight are noted. BMI is then calculated with the help of the following formulas. Formula is given: BMI body of weight, height into height. Body of weight is in kilogram and height in meters. ओके, तो बॉडी मास इंडेक्स को जो है आपके जो मैथमेटिशियन थे, स्टैटिशियन थे, बेल्जियम के रहने वाले थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, जिनका नाम क्या था? एडोल्फ क्वेटलेट। मीन्स एडोल्फ क्वेटलेट ने आपको इंट्रोड्यूस कराया मीन्स बीएमआई को इंट्रोड्यूस कराया कि बीएमआई है क्या, बॉडी मास इंडेक्स है क्या, बॉडी मास इंडेक्स का हेल्थ से क्या, फिटनेस से क्या रिलेशन है। तो बॉडी मास इंडेक्स का फिटनेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं। बॉडी मास इंडेक्स आपको इंडिकेट करता है, मीन्स बीएमआई आपको इंडिकेट करता है आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, ओबेस हो और नॉर्मल। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज दैट योर बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज 60 kg। बॉडी वेट इंडिविजुअल इज 60 kg। ठीक है, एंड हाइट इज 1.5 मीटर्स। तो उस समय बीएमआई क्या होगी आपकी बॉडी की? तो बीएमआई का फार्मूला जो आपका दिया हुआ है, बॉडी वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। तो योर बॉडी वेट इज 60 kg। तो 60 ओके इंटू 60 अपॉन फिर क्या है, हाइट इंटू हाइट। तो हाइट इज 1.50 मीटर्स। तो 1.50 इंटू 1.50 60 अपॉन, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे इसको आप, तो होगा 2.25। तो यहाँ जो आ जाएगा 2.25, एंड 16 अपॉन 2.25 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 26.66। 26.66
केजी पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट होती है केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी मैंने बता दिया। अब आपको ये देखना होगा कि 26.6 केजी पर मीटर स्क्वायर आपका, आप अंडर वेट हो कि ओवर वेट हो, है कि आप नॉर्मल वेट के हो। तो ये बीएमआई को जो कैलकुलेट किया है आपने, तो आफ्टर द बीएमआई इज कैलकुलेटेड द चार्ट ऑफ हाइट इन नॉर्मल बॉडी रेंज, मीन्स आपकी जो ये 26.66 ये आपका केजी पर मीटर स्क्वायर आया है, ये आपका नॉर्मल बीएमआई इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। अब आपको बीएमआई का मैं यहाँ चार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस चार्ट को आप देखिएगा। मैंने जो आपको बॉडी मास इंडेक्स बताया है, बीएमआई बताया है, मैंने जो फॉर्म अभी मैंने जो इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि बीएमआई का जो बीएमआई आपका 26 पॉइंट आपका 69 आया हुआ था। बीएमआई जो है आपका क्या आया हुआ था, बीएमआई आपकी जो आई हुई थी वो 26.6 केजी पर मीटर स्क्वायर आई हुई थी। तो वो क्या थी, जो 26.6 केजी पर मीटर स्क्वायर जो आपका वेट आया हुआ था, ये आया हुआ था आपका बीएमआई। अभी मैंने निकाला हुआ था बीएमआई, तो बीएमआई आपकी आई हुई थी 26.6 केजी मीटर स्क्वायर, यही आपकी बीएमआई आई हुई थी। तो बीएमआई ये जो है ये किस कैटेगरी में आएगी, शायद मैंने आपको नॉर्मल वेट बताया, नॉर्मल वेट नहीं होगा, नॉर्मल वेट वो नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ का आपका हेल्दी जो दिखा रहा है, मीन्स नॉर्मल वेट जो दिखा रहा है बिटवीन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर टू 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर, मीन्स ये 24 पॉइंट मैक्सिमम है। तो क्या है, इस रेंज से एबव है, तो जब इस रेंज से एबव होगा तो वो ओवर वेट होगा। क्या होगा, ओवर वेट, मीन्स आपकी जो ये बीएमआई जो इंडिकेट कर रही है वो कह रही है कि आप ओवर वेट हो। तो जो ये बीएमआई का जो मैंने आपको ये चार्ट प्रोवाइड कराया है, ये चार्ट क्या है, अंडर वेट, मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बीएमआई जो चार्ट है, जो बीएमआई दिया हुआ है, आप उस हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपकी बीएमआई किस कैटेगरी में आती है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लियरिफाई किया गया है। अंडर वेट जो है वो लेस देन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, अंडर वेट की कैटेगरी होगी लेस देन 18.5, क्लियर। और जो हेल्दी की कैटेगरी होगी बिटवीन 18 क्या होगा, बिटवीन 18.5 टू 24.9। जब आपकी कैटेगरी जो है बीएमआई का जो बीएमआई जो आपको आपके पास आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी, तो 18.5 टू 24.9 के बीच में यदि रहती है, बिटवीन रहती है, तो आप जो है वो क्या होगे, आप हेल्दी कैटेगरी में आओगे, और इससे एबव होगी तो आप ओवर वेट में आओगे। अब ओवर वेट की कैटेगरी क्या है, ओवर वेट की कैटेगरी है बिटवीन 25 टू 29.9। क्या है ओवर वेट की कैटेगरी, बिटवीन 25 टू 29.9। यदि आपकी बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स यदि आपका 25 से लेके 29.9 तक आता है, तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। अब आप कहोगे ओबेसिटी मीन्स मोर देन, तो जो ग्रेड 1 है, ओबेसिटी की ग्रेड 1 है बिटवीन 30 टू 34.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। यदि आपकी ओबेसिटी मीन्स आपकी बीएमआई, यदि आपकी बीएमआई जो है वो 30 से लेके 34.9 के बीच आती है, तो आप ओबेसिटी की ग्रेड 1 में हो। और ग्रेड 2 में क्या होगा, ग्रेड 2 में होगा बिटवीन 35 टू 39.9, मीन्स if that calculate the BMI is
between 30 to 34.9 is 35 to 39.9 is grade 2nd obesity, category of grade 2nd obesity. And grade 3rd obesity more than 40 means of 40 से above आपका यदि BMI है तो आप means going on a critical health problems, critical health problems. Clear it? Next topic. अब क्या है WHR? जब WHR का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ वेस्ट अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ हिप्स. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हिप्स, तो जो आपका WHR है, कैलकुलेशन ऑफ वेस्ट हिप रेशियो. तो वेस्ट हिप रेशियो or WHR is the ratio of the measurement of the waist and the hip. It is calculated by measuring the circumference of the waist just above the upper hip bone and the circumference of the hips at the widest part. This is done by using a measuring tape. The measurements are taken in either centimeters or inches. The measurements are then applied the following formula. Given the following formula in on the blackboard: circumference of waist upon circumference of hips. Thus, WHR takes into account the differences in body structure. It is useful measure of fat distributions and takes into account the fat stored in the body around waist and hips. Waist and hips ratio is considered as the measure of the health of a person and is also an indicator of the risk of developing some serious health problems. Research study indicate that food stored primarily in the belly instead of the hips increases the chances of suffering of heart attacks, hypertension, and diabetes. Again repeated, waist hip ratio or WHR is the ratio of measurement of the waist and the hip. It is calculated by measuring the circumference of the waist just above the upper hip bone and the circumference of hips at the widest part. This is done by using a measuring tape, and the measurement are taken in either centimeters or inches. The measurements are then applied to following formula given on a blackboard: WHR, circumference of waist upon circumference of hips. Thus, WHR takes into the account the differences in body structure. It is useful measures of fat distributions and takes into account the fat stored in the body around waist and hips. Waist hip ratio is considered as the health of a person and is also indicators of the risk of developing some serious health problems. Research studies indicate that fat is stored primarily in the belly instead of the hips increases the chances of suffering from heart attacks, hypertension and diabetes. Means ये यदि आपकी WHR नॉर्मल कैटेगरी में नहीं है, 100% all of you sure that going on hypertension, heart attack and blood pressures and diabetes. This is a major present time. This is a major disease on these situations. Clear? Means BMI WHR क्या है? तो WHR में आप क्या करते हो? तो WHR में आप जो है वो
जो आपकी बोन का जो वेस्ट की बोन है, कमर की बोन है, उसकी जो उसके नीचे आते हो, जो बुटक हिप का पोर्शन होता है, उसका सरकमफ्रेंस निकालोगे। और उसका सरकमफ्रेंस निकालने के बाद फिर आप जो है फिर आप बोन के ऊपर वाले पोर्शन का जो है आप मेंस बैक पोर्शन का जो है आप सरकमफ्रेंस निकालोगे। और सरकमफ्रेंस, दोनों सरकमफ्रेंस निकालने के बाद आप डिवाइड करोगे। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो WHR होगा। अब WHR आपका किस कैटेगरी में है, उसको मैं आपको एक चार्ट में क्लियर करता हूँ। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि आपका WHR किस किस कैटेगरी में आता है। क्लियर है? तो देखिए WHR के जो नाम्स हैं, जो WHR के नाम्स जो दिए हैं, अकॉर्डिंग जेंडर, एक्सीलेंट पोजीशन में कौन सा है, गुड में कौन सा है, एवरेज में क्या है, और एट रिस्क में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल्स में जो है, जो पुरुष वर्ग हैं, जो मेल्स में होना चाहिए, क्या है, ग्रेटर देन 0.85। मीन्स यदि 0.85 से ऊपर है तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हो। क्लियर? यानी WHR आपका 0.85 से 0.89 मीन्स 0.85 to 0.89 if that comments on WHR means you are going on a good position, and average position means 0.90 to 0.95। क्या है? 0.90 to 0.95 is the average WHR. Clear it? And greater than minus 0.95, greater than minus 0.95 means going on a risk position. This is this WHR chart is according to gender, especially males. Clear? And females greater than 0.75. If that your WHR is greater than 0.75 means your WHR condition is excellent. Clear? And your WHR is for females 0.75 to 0.79 means your WHR is good position, and your WHR is 0.80 to 0.86 means your WHR is going on a average position, and your WHR is greater than and minus 0.865 is going on a high risk or risk for females. Clear it? Again repeat it. WHR norms: gender, excellent, good, average, and at risk. For males, greater than 0.85. For this is a good condition, and here the WHR is 0.85 to 89 is a good condition, and average condition is 0.90 to 0.95, and the risk position is greater than or minus 0.95. For females, greater than 0.75, and this is a excellent position. Good condition, WHR is 0.75 to 0.79, and average condition 0.80 to 0.86, and the risk position, risk condition greater than and minus 0.86. ठीक है? मीन्स यदि आपका 0.WHR 0.86 से एबव है और या 0.86 से माइनस है तो आप रिस्क पोजीशन। क्लियर इट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज somatotypes or body types. So we find
great varieties are we find great variations in the body structure of individuals. Some individuals have a flabby build, and some are robust, and some are lean and thin. Our body structures depends on many factors such as heredity, growth, growth and development, and the type of activities we do. Variations in size and attachments of muscles, the structure of the joints, and length of the bones affect the performance of physical activities. Therefore, the study of body structure of an individual's becomes important for the classifications of individuals, for instructions purpose, for judging the suitability of an individual for some particular activity. We can be defined as the classification of human body according to its shape, size and structure. On the basis of the body structure, we can divide individuals in the following three main categories. What is three main categories? Three main categories is endomorphs, mesomorphs and ectomorphs. Endomorphs. Endomorphs, a person with a soft, round build of the body and having a high proportions of fat tissues come under the category of endomorph. Clear? The body of such a person is a pear shapes, and endomorphs have wide hips and shoulders, short and thick neck, and short arms and legs. Clear? What is the advantage of endomorph? The body of endomorphs is best suited for powerlifting, as they have high levels of strength. And second, they can be good swimmers and excel in the sports such as shot put. Means क्या है आपका, तो जो बॉडी की कैटेगरी है आपकी जो है वो थ्री टाइप्स में दी गई है। वो बॉडी का जो शेप के अकॉर्डिंग कैटेगरीज होगी, बॉडी कैटेगरी, तो जो बॉडी की कैटेगरी होगी वो बेसिकली थ्री टाइप होगी। एंडोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा? एक्टोमॉर्फ्स। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा मेसोमॉर्फ्स। दूसरा होगा आपका मेसोमॉर्फ्स। एंड तीसरी कैटेगरी क्या होगी? एक्टोमॉर्फ्स। तीसरी कैटेगरी एक्टोमॉर्फ्स। तो तीसरी कैटेगरी जो होगी आपकी एक्टोमॉर्फ्स। There are three types of category according to body shape and size. That's all, and good day.